welcome to the 30 days Python challenge, guys. And this is our day one. And just as today is our day one, we are going to learn right from the definition of Python. Okay, who developed it and what are the uses of it. So, just one thing that if you are starting with Python, you are going to gain a lot of confidence within yourself. So Python is a general purpose programming language. Python has very few syntax than Java or C++ or any other language. The uses of Python are web applications, desktop applications, machine learning, data science, games, and whatnot. And it was developed by Guido van Rossum. Okay, he is currently alive and he is 67 years old. And it is I don't know. I think it's a very easy and perfect language. So let's just begin with the practical number one. We'll be performing practicals overall on VS Code. You can choose any other IDE. Okay. Just make sure that Python is installed in your devices, and if not, then there are many other tutorials, right? So please do install them. Okay. So let's just start with the first experiment or the practical, and the name of our first experiment or practical will be just simply printing a welcome message. Okay, print welcome message for students. Okay, so meaning of this hash is you can comment out any of the lines. Okay, अगर हमने हैश नहीं डाला तो एरर आएगा. हैश डालने का मतलब होता है कि एक टाइप का नॉर्मल सेंटेंस कंसिडर करना. ये कोड का पार्ट नहीं रहेगा, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए रहेगा. ओके, एंड नाउ हम एक प्रिंट लेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी डाल सकते हैं, बट आई एम एक्चुअली हैबिचुअल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो मैं वो प्रेफर करूँगी. एंड आर हेडिंग वेलकम स्टूडेंट्स. ओके, ये हमारी पहली लाइन. एंड द सेकेंड लाइन प्रिंट दिस इज द डे वन Python. Okay, we'll simply print it from here. सो जस्ट वन थिंग दैट डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रेफर करना अपने फाइल सेव करना, बिकॉज अगर हमने प्रैक्टिकल 1.py डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किया तो कभी कभी टेक्स्ट फाइल बन जाती है. टेक्स्ट फाइल नहीं बने इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना ताकि वो पाइथन फाइल बने. सेव, वी विल रन इट. So this is our output, right? Welcome students, this is the day one of Python. I think it is very easy, you don't need so much of hassle in it. Okay, now we'll start with the second practicals. The second practical will be, we will asking the name and then we will welcome. Okay, we will asking the name from the user and then we will also print welcome. So जब output आएगा तो welcome and so user का name, it will also be print. Okay, so first of all we will hash and write the name of the program. Okay, asking name and printing hello. तो welcome लिखते हैं, welcome. Okay, so name is equal to इनपुट. सो अभी हम लोग को इनपुट यूज़र से चाहिए, सो वेरी ऑब्वियसली हम इनपुट लेंगे. सो यहाँ पे इनबिल्ट एक फंक्शन है जिसे इनपुट बोलते हैं. इनपुट लिखना, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास और एंटर द नेम. ओके, एंटर द नेम डालने के बाद आई विल जस्ट से कि इसमें दो स्पेस छोड़ दो. ओके, यू विल गेट टू नो अबाउट इट व्हेन द आउटपुट कम्स. ओके, एंटर द नेम. ठीक है, नेम आने के बाद द मैसेज वी नीड टू प्रिंट मैसेज इज इक्वल टू. Okay, so what we need to print is welcome, welcome, and we will do plus name. So plus is used to concatenate. ओके, कॉन्कैटिनेट करना मतलब ये दोनों को जोड़ देगा, वेलकम को और जो भी यूज़र नेम डालेगा उसको. ठीक है, एंड हमने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है क्योंकि यूज़र, ये जो पूरा सेंटेंस था, ओके, उसको ये डिफाइन कर रहा है, तो सिर्फ वेलकम प्लस नेम एंड दैट्स इट. वी आर गुड टू गो. जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट के बिना ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू गेट आवर आउटपुट. And print only we need to write message because we are not going to print a word message, we have a line message. Okay,
एंटर द नेम। नाउ अब आपको पता चलेगा आपने स्पेस क्यों डाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्सर हम लोग को नेम से एटलीस्ट एक स्पेस छोड़ के मिला है। अगर हम स्पेस नहीं छोड़ते इधर, लेट्स जैसे अभी जो मैंने किया, इट्स स्लो, एंटर द नेम, तो कर्सर के यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो कभी कभी उससे कंफ्यूजिंग होता है, राइट। PURNIMA, पूर्णिमा, वेलकम पूर्णिमा। ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, दिस इज आर प्रैक्टिकल नंबर 2। ओके, now we will jump on to practical number 3. Okay, so comment out another word, this is practical number 3. So in this practical, we are going to write a program to add two integers. Any integers will do, but we are going to print and add integers. Okay. So one thing, guys, मैं एक ही फाइल में अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, but आप I prefer that you are supposed to make different files so that you can track your progress. You can refer any program you want. Okay? So program to add two integers. So we are going to take input from the user, and if we are going to take input from the user, then we are going to write and use input वाला वो जो वर्ड था उसको यूज़ करेंगे। सो इनपुट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले नंबर 1 लेंगे, N1। यू कैन नेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, N1 या नंबर 1, बट आई एम मेकिंग इट अ लिटिल शॉर्ट, क्योंकि पाइथन में छोटे वर्ड्स लिखने से भी काम हो जाता है। तो आई एम गोइंग टू टेक नंबर 1 and int. We are going to add integers, so we are going to take int, then a bracket, input, and then another bracket, and what we need to print. So enter the first number and space। आई थिंक अभी तक पता चल गया होगा कि मैं स्पेस लेने क्यों कह रही थी, ताकि आउटपुट आए और हमको लिखने के टाइम पे इजी हो। एंड N2 is equal to int input, enter the second number। it's very clear, right? And what is going to be our result? So result is equal to N1 plus N2। Result is going to be N1 plus N2, and then print brackets के अंदर RES। okay? RES, इट इज़ नॉट अ वर्ड गाइज, प्लीज़ मेक श्योर इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में मत लिखना। रिस्पॉन्स या रिजल्ट, ये एक सेंटेंस है जो हमारा आंसर स्टोर कर रहा है N1 एंड N2 का, तो प्रिंट उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा इन्वर्टेड कॉमास से। रिस्पॉन्स सिर्फ प्रिंट होके आएगा एंड विल नॉट गेट आर आंसर। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ अगेन, just to make it more attractive, I'm going to write result is equal to comma RES। Enter the first number 55, enter the second number 55, and our answer is 110। And just to make our code more attractive, we wrote result is 110। I think this is also clear to you all. Okay, now we will proceed to practical number 4, hash practical 4। We are, please don't forget to comment out the line, okay? And in this practical, we are going to learn how are we going to add any number which is a decimal number। So program to add decimal number given by user। So number 1 is equal to, so decimal, डेसिमल नंबर्स आर एंड इंटीजर नंबर, बोथ आर डिफरेंट। इंटीजर्स में हमने इंट लिखा था एंड डेसिमल नंबर्स में वी आर गोइंग टू राइट फ्लोट। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है नंबर, ऐसे वर्ड्स थोड़े ही है। स्ट्रिंग के लिए STR यूज़ होता है, डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट यूज़ होता है, एंड इंटीजर्स के लिए इंट होता है। अब नॉर्मली ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, फ्लोट लिखना है, इनपुट लिखना है, वापस से एक ब्रैकेट, एंड एंटर द फर्स्ट नंबर N2। ओनली गुड थिंग अबाउट VS कोड इज ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ता है। एंटर द सेकेंड नंबर, स्पेस, रिजल्ट इज इक्वल टू N1
प्लस इनटू एक्स्ट्रा इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का मतलब स्पेस होता है, अगर एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया तो वी आर गोइंग टू गेट एरर्स डेफिनेटली। ओके, so this is result. I'm going to make this code very short. I just wanted to let you understand. Now 56 55.90, enter the second number, and the second number will be 4 point something. So our answer is 60.4675, right? I hope this was very easy for you all. So the last practical for the day will be practical number 5. ये थोड़ा सा लेंदी होगा because इसमें we are going to find the average of the three numbers and we are going to round them off. Let's just see. Program to find the average of three numbers taken from the user. Okay. So I hope I'm very clear कि integers, man. I just want to repeat again because for the beginners they will find a little difficulty, और एल्स मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता रहता है इंटीजर्स के लिए इंट यूज़ होगा, डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट यूज़ होगा, एंड इफ देर इज एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग एंड वी आर गोइंग टू यूज़ एस टी आर, बट एज सच अभी तक तो ऐसा कोई केस हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ प्रैक्टिकल. एन वन इज इक्वल टू एल ओ ए टी फ्लोट input, enter the first number. So we are going to see, two, three, second. So till now हमने जो प्रोग्राम किया है उससे वी आर गोइंग टू गेट द नंबर्स, वी आर गोइंग टू टेक इनपुट, एंड अभी जो लाइन रिकमेंड हो रही है एवरेज, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू टेक इट एवरेज इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री divided by 3. Okay, you can also write 3 or 3.0. Float लिया है इसलिए they are recommending 3.0, or else 3 will also do. Now we are going to print the average, right? The number 1 here will be 55 point something. So the answer is 37,000 and a little bigger, right? So I just want this answer to get a little short, right? मैं इसे चाहती हूँ कि ये राउंड ऑफ हो जाए दो डेसिमल, दो इंटीजर्स तक डेसिमल के बाद, या थ्री इंटीजर्स तक. तो अब हम लोग वो सीखेंगे कि ये कैसे होता है. सो एक नया स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट. जस्ट टू मेक आवर कोड मोर अट्रैक्टिव, एवरेज इज इक्वल टू कॉमा राउंड ए वी जी. डोंट फॉरगेट हमने जो नंबर फिफ्थ लाइन पे एवरेज लिखा है वही सेम टू सेम हमें इधर लिखना है. सेम नहीं लिखा तो ऑब्वियसली वी विल गेट एरर्स एंड विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट. एवरेज कॉमा टू, एवरेज कॉमा टू से डेसिमल के बाद टू नंबर्स तक एडजस्ट हो जाएंगे चाहे कितना भी बड़ा आंसर हो. फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड सी. सबसे फर्स्ट हम लोग को जो आंसर मिला था वो काफ़ी लाइक कमेंडेबली बड़ा था, एंड हमने ये राउंड यूज़ किया. राउंड यूज़ करने के बाद सिर्फ 0.88 आ रहा है. सो आई थिंक इट वॉज वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइज. अगर इसमें 3 4 5 6 2 की जगह चेंज करेंगे तो यू विल गेट वैसा आउटपुट. एंड दैट्स इट फॉर द डे. आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर एंड थैंक यू.